नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन्स के बारे में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन है सेशन 2023 और 2024 के लिए अंडर जेआरएफ कैटेगरी। लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, लास्ट डेट है 4th August 11:50 PM तक। So let's look at the details. But before that, if you are new to my channel, please do subscribe. And if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. तो ये है सब्जेक्ट एडमिशंस टू पीएचडी प्रोग्राम academic session 2023-24 under JRF category. Online applications are invited for PhD program academic session 2023-24 under JRF category. Candidates can apply online from 5th July 2023 to 4th of August 2023 up to 11:50 PM by registering on this website. The intake and eligibility criteria along with other details related to the PhD program under JRF category are mentioned in the JNU e-prospectus, that is electronic prospectus, available on the JNU website. Yeah. Candidates must ensure themselves about the eligibility criteria and other details before applying. Online applications from form for PhD program through entrance examination 2023-24 will be announced separately. Candidates are advised to visit JNU website regularly for further information. तो जो नॉन जेआरएफ कैटेगरी के लिए जो रिटन टेस्ट होगा, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसकी नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आएगी। तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम अंडर जेआरएफ कैटेगरी, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एमबीए प्रोग्राम थ्रू कैट, क्लिक हियर फॉर एडमिशंस टू एमएससी प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटेड साइंसेज, एमबीए लिस्ट टू रिजल्ट्स एमबीए। तो ये सारा कुछ है नोटिस ऑफ पीएचडी अंडर, और ये पीएचडी का ई प्रोस्पेक्टस भी है। ये काफी लंबा चौड़ा प्रोस्पेक्टस है, 108 पन्नों का। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तब क्या होता है, तो ये है fill in the online application with personal details, fill the online application with qualification details, professional details, upload scanned images of photograph and signature. The image should be in JPG or JPEG format only. Size of photo or image must be between 10 kilobyte to 200 kilobyte. Size important है, वरना अपलोड नहीं होता है। Size of signature image must be 4 kilobyte to 30 kilobyte. यहाँ भी साइज इंपॉर्टेंट है, अगर साइज से बड़ी या छोटी इमेज होती है तो अपलोड नहीं होता है। If not registered, please click on the new registration link. If already registered, please click on the sign in link. तो ऐसे ये न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आ गया है नंबर ऑफ चॉइसेस की, एप्लीकेशन फी है, सब डिटेल है, फॉरेन नेशनल्स के लिए, इंडियन नेशनल्स के लिए एप्लीकेशन और प्रोसेस है। और यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड द ई प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब ये है कि आपने ई प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया है, आपने सब कुछ समझ के ही आप अप्लाई करें, ताकि बाद में आप ये नहीं कहें कि हमें बताने था और हमारी फीस रिफंड कर दो। तो ऐसा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा डिटेल खुल के आया है और आप इसको भरिए और फिर सबमिट कीजिए, ठीक है। I wish you all the best and please keep watching my channel. Check out the description box.